opt for some classes like for a specific topic, which I think that I should do it again. So Okay. even I can come in that Yeah, class. no issue. Anyone can come in that class. ठीक है? So I'll talk to Nakshatra sir. I think tomorrow there is a class at 12 p.m. So please first confirm from Nishkarsh sir. Yeah, Nishkar sir. Yeah, he will tell you the exact timing. Thank you, sir. Good. You are welcome. So in last class हमने start कर दिया था principal solutions. So युवराज आप थे last class? Yes, sir, I'm regular. Okay. ठीक है. So start करते हैं. Next we have general solution. So हमने last class में किया था principal solution, which is only between 0 and 2 pi. From 0 to 2 pi, we called the solution as principal solution. और उसमें हमारे 2 ही solutions आ रहे थे जितने भी हमने find किए थे. Because there are only 2 quadrants in which the any trigonometric ratio is negative or positive. That's why we are always getting the 2 answers. Now next we have general solution. So please write the definition. The expression involving integer n, which gives all the solution of the trigonometric equation is called the general solution. So the definition is the expression involving integer n, which gives all the solution of the trigonometric equation is called general solution. So principal solution में हमारे पास सिर्फ 2 solutions थे, but we know that there will be infinite solutions क्योंकि हमारे पास this is 0 and after this again we get 2 pi. तो next हमारे पास फिर 4 pi आ जाएगा, 6 pi आ जाएगा, 100 pi आ जाएगा. So इसलिए हम general solution में क्या करते हैं, integer n use करेंगे. For example, if we talk about the first type first, and this first is sin theta is equal to 0. We have this one, sin theta is equal to 0. So sin 0 कब होता है? Sin 0 कब होता है? Sin 0. 0. Sin 2 pi क्या होता है? Sin 2 pi is 0. sin 2 by 0, sin pi is 0, sin 3 pi is 0. It's mean pi का जो भी interval होगा, that will give us the solution for this trigonometric equation. So we can say theta is equal to n pi, where n belongs to any integer. Okay. So general solution में क्या होता है? First type is sin theta is equal to 0, and so we will get the answer theta is equal to n pi. अब अगर प्रिंसिपल ठीक है, सो जनरल सॉल्यूशन में ये जो आपका सॉल्यूशन है वो अब आपको सारे आंसर्स दे रहा है. आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करेंगे एनी इंटीजर, यू विल गेट द डिफरेंट आंसर. फॉर एग्जांपल 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 100 पाई, सिमिलरली -pi, -2 पाई, -3 पाई. So the general solution for this equation sin theta is equal to 0 is theta is equal to n pi. Any doubt in this? No, sir. Okay. So next we have cos theta is equal to 0. So cos 0 कब होता है? 90. 90. Pi by 2. Similarly, we can say 3 pi by 2. Similarly, we can say 5 pi by 2, 7 pi by 2, and so on. So it's mean odd multiple जो pi by 2 का होगा, that will give us the cos 0. So anyone can tell me the formula when cos theta is equal to 0? N by 2 pi. आपने बताया n by 2 pi. Okay. Suppose if we put the value n is equal to 2, then what is the answer?
Oh, okay. No, so sir, when you're writing n belongs to all odd means Sir, odd. n belongs to odd numbers. हाँ, if we are using this formula, then we have to define that n belongs to odd integers, है ना? तो n odd integers होगा. But अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे standard एक formula लिख दें, standard formula, जहाँ Minus 1. n is 2n minus 1 and n belongs to integers. हाँ. Positive. So we can say theta is equal to, so we can say theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 and n belongs to an integer. So this formula will always give you the odd multiple of pi by 2 irrespective value of the n. Whether the n is odd or even, this formula always give you an odd multiple of pi by 2. Okay, so for cos theta is equal to 0, we have the formula theta is equal to 2n plus 1 pi by 2. Any Say n doubt in minus 1 this? तो 2n minus 1 भी हो सकता है. वो भी हो सकता है. Both are correct. Uh, so next is third one. Third is tan theta is equal to 0. So anyone can tell me when tan theta is 0? 0. 0, 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, again the multiple of pi. So we can say that theta is equal to what? N pi, and n belongs to any integer. Any doubt in this? No, sir. No, sir. Okay. So next is cot theta is equal to 0. So when this cot is 0? Cos theta. 90. 90. Again, it's mean odd multiple of pi by 2. So we can say theta is equal to, again same formula, 2n plus 1 pi by 2 and n belongs to any integer. Any doubt in this four formulas? No, sir. No, sir. Okay, so and next is cosec and sec theta can never be 0. Cosec theta and sec theta can never be 0. ठीक है, ये 0 हो नहीं सकते. हम ग्राफ करेंगे ट्रिगो का लास्ट में, देन वी विल सी कि इनका ग्राफ कभी भी 0 नहीं आता है. कोसेक कैन नेवर बी 0. ठीक है. सो कोसेक क्या होता है? 1 बाय साइन. तो 1 बाय साइन कभी भी 0 नहीं हो सकता है. So cosec theta and sec theta can never be 0. So we don't have any formula for cosec theta is equal to 0 and sec theta is equal to 0. So you have to learn these four formulas. ठीक. नोट कर लिया सबने? रब कर दें इसको. Excuse me, sir. Yes, Yuvraj. So have we done almost every formula of trigonometry, or do Uh, we learn more? In the trigonometric equations, the formulas are remaining. Then there are two more formulas. वो आपको बताने हैं मुझे. प्लस जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है एनसीईआरटी के, आप बैक साइड देखोगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, हमें वो करना है. सो स्टिल देयर आर सम फॉर्मूलाज. Thank you, sir. यू आर मोस्ट वेलकम. So next question is find the general solution of the following equations. First is sine 2 theta is equal to 0. Find the general solution of this equation. So we know that, ठीक है, formula हम लिख देंगे. Sine x is equal to 0, then x is equal to what? N pi, n belongs to any integer. ठीक है. So from this, in place of x, what we have? We have 2 theta. So we will say 2 theta is equal to 0. So in place of x, we have 2 theta. So 2 theta is equal to n pi, where n belongs to any integer. So we will get theta is equal to n pi by 2. ठीक है, n belongs to any integer.
This is the general solution. Okay, this is the general solution. Just give me 1 minute. सर इस आंसर से हम कंक्लूड क्या करेंगे? Yes, Yuvraj. सर मैं कह रहा था हम किस- इस आंसर से मतलब कंक्लूड क्या करेंगे कि अगर हम थीटा की वैल्यू 2 पाई की जगह मतलब वहां पे रखते हैं n पाई बाई 2 तो वो हमें सेम जनरल फॉर्मूला देगा जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. हम नहीं, ये आपसे कह रहे हैं कि sin 2 theta 0 कब होगा. So we are saying whenever we put theta is equal to n pi by 2, then this will always give us the answer 0. सर For इससे वही तो example, सर ये साइन थीटा वही आ रहा है क्लास में मतलब 2 से 2 कट जाएगा. कहाँ कैंसिल होगा? अच्छा ये, हाँ हाँ हम ये कह रहे हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू n pi by 2 होगा, then this sin 2 theta will be 0. For example, in place of n put 1. ठीक है, n is equal to 1 आप पुट कीजिए, तो ये कितना आ गया? pi by 2. Put here sin 2 into pi by 2. So this is equal to sin pi, which is 0. So theta is equal to n pi by 2 आपको सारे solutions दे रहा है जिसमें sin 2 theta हमेशा 0 आएगा. ठीक है सर गॉट. ठीक है, okay. Any other doubt? Any other doubt in this type? Please try this question. Try this. Sin 3 theta by 2 is equal to 0. Please try this. 2n pi by 3 where n belongs to integer. Theta is equal to 2n pi by 3 Where and n belongs to belongs any integer. Okay. Then try this. Sin square 2 theta is equal to 0. Tell me the answer. Answer of this, sin square 2 theta is equal to 0. n pi by 2. Answer is n pi by 2. Okay. Theta is equal to n pi by 2. 2. Anyone have the doubt in this? Theta is equal to n pi by 2? हाँ सर एक बार ये एक्सप्लेन करना. Now in this case, sin square 2 theta is equal to 0. So it's mean sin 2 theta is equal to 0. है ना, रूट हम ले सकते हैं both side. Now sin 2 theta 0 कब होगा? When 2 theta is equal to n pi, where n belongs to any integer. So theta is equal to what? N pi by 2. That's a general solution. यस सर गॉट. थैंक यू सर. Okay. सर ये जो साइन स्क्वायर 2 थीटा है उसे हम साइन 2 थीटा होल स्क्वायर भी कर सकते हैं ना? हाँ, sin square theta or sin theta whole square. This is the same thing. Next, try this question. Cos 3 theta is equal to 0. Please tell me the answer. 2n plus 1 pi by 6 where n Answer belongs to. is 2n plus 1 pi by 6. So ये सबका हो गया फिर. हर्षित, युवराज, मानस, Yes, sir. Yes, sir. यश, Yes, हमाद. Yes, sir. Done, sir. हमाद, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है. Next question. I think question 5th is tan 2 theta is equal to 0. Tell me the answer. n pi by 2. This is what? n pi by 2. Theta is n pi by 2.
n belongs to any integer. Teach. Please check कीजिए सबका आंसर यही है. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Any doubt in these types of questions? नो सर. No, sir. Okay. Start करें फिर next type. So general solution में that was the first type, and this is the second type. Type second. Type second is what? Sin theta is equal to sin alpha. Okay. Type second we have this sin theta is equal to sin alpha. So from here we have n pi plus minus 1 to the power n alpha. ठीक है. Suppose sin theta is equal to sin alpha आता है, then this formula is theta is equal to n pi plus minus 1 n to the power alpha. हम देखते हैं कि ये correct है या नहीं है. Hamad, sin is positive in which quadrant? Hamad, you can use the chat box. Anyone else? Sin is positive in which quadrant? फर्स्ट एंड सेकंड. First and second. First and second. ठीक है अमाद, first और second में sin positive होता है. So let n is equal to 0. यहाँ 0 put करते हैं, then theta is what? Alpha. Suppose हमारे पास, चलिए हम क्वेश्चन में ले लेते हैं. Suppose we have this question, sin theta is equal to sin pi by 3. Suppose we have this question. तो हमने कहा that our solution is this one. Theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. Alpha is this angle. Suppose we have put n is equal to 0, then this is what? 0 plus minus 1 to the power 0 alpha. So it's mean theta कितना आ गया alpha? तो क्या ये solution correct है? अगर Yes, हमने sir. n is equal to 0 put किया, Yes, sir. so the angle which we are getting is this correct? बिल्कुल ठीक है. Theta is equal to alpha. First quadrant में है. हमें एक और angle चाहिए, है ना? हमें एक और angle चाहिए which satisfy this equation. So हम क्या करेंगे? n is equal to 1 put कर देंगे. तो थीटा क्या आ जाएगा? pi plus minus 1 to the power 1 alpha. So it's mean pi minus alpha. So what is sin pi minus alpha? Sin alpha. Sin pi minus alpha, pi hai, no change. Sin alpha, check the quadrant. This lie in the second quadrant, so this is positive. So we get sin alpha. So it's mean जब हमने n is equal to 1 put किया, then our answer is correct. Let's try for n is equal to 2. तो ये कितना आ जाएगा? Theta is equal to 2 pi plus minus 1 square alpha. So this is what? 2 pi plus alpha. तो ये कहाँ गया 2 pi plus alpha? This is 2 pi. This is 0 and this is 2 pi. So 2 pi plus alpha again in the first quadrant. तो आपको same angle मिल गया. हमें ये भी पता है ना कि sin 2 pi plus alpha क्या होता है? 2 साइन pi अल्फा. and no change. Sin alpha, this line the first quadrant, so positive. यस सर. ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा. n is equal to 3 सपोज हमने पुट किया, then we get 3 pi minus alpha. ठीक है, so 3 pi कहाँ लाई करेगा? 2 ये रहा, तो 3 pi lie this. So 3 pi minus alpha means again second quadrant. तो sin 3 pi minus alpha is equal to what? Again sin alpha. क्लियर वो? So ये फॉर्मूला जो है, ये हमेशा हमें जो एंगल देगा वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दे देगा इफ अल्फा इज एक्यूट. So from this अगर हम n की different values put करते हैं, then we will always get the alpha which satisfy this equation. क्लियर वो? जैसे हमने एग्जांपल लिया, तो यहाँ एंगल हमेशा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड में ही आ रहा है, ये कभी और किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता. इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. किसी Yes, को sir. भी डाउट है? So in general solution we have first this formula that when sin theta is equal to sin alpha, then we will use theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. Okay. Okay. So next is cos theta is equal to cos alpha.
So for this, we have the formula theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Let's take example. Cos theta is equal to cos pi by 3. Okay. So this line in which cos pi by 3 is first quadrant. So cos किस quadrant में positive होता है? First और last. First and last one. ठीक है, first and fourth quadrant. So we need the angle. So we need the angle in always in first and fourth quadrant. So take any value of n. For example, 0. हमने 0 लिया, then theta is equal to what? Plus minus alpha. So plus means anti-clockwise direction, यानी first quadrant आ जाएगा. Minus alpha का मतलब fourth quadrant आ गया. यानी for n is equal to 0, we get the two values, एक plus alpha, एक minus alpha. Both are correct. Take another value. For example, we have put n is equal to 1, then theta we get 2 pi plus minus alpha. So 2 pi plus alpha कहाँ angle देगा? In the first quadrant. 2 pi minus alpha कहाँ angle देगा? In the fourth quadrant. And again we get the angle in this quadrant and this quadrant. Both are positive. Suppose if we put n is equal to 2, then this will give us 4 pi plus minus alpha. So plus alpha means again first quadrant, minus 4 pi minus alpha means again second quadrant. So this one is clear. So if we put the different values of n in this formula, then the final value of the angle will lie in the first quadrant and fourth quadrant. सर इस चीज का एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन बच्चे यही होता है कि अगर हमें जनरल सॉल्यूशन का मतलब यही है ना कि हमारे जो इनफाइनाइट एंगल्स हैं हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज लाइक दिस. ओके सर. ठीक. So this is our second formula. Next is third formula. Third is tan theta is equal to tan alpha. So theta यहाँ से कितना आता है? This is n pi plus alpha. ठीक है. So take an example. Suppose हमारे पास है tan theta is equal to tan pi by 3. So put n is equal to 0. तो theta कितना आ गया? Alpha यानी first quadrant. Put n is equal to 1. तो angle कितना आ गया? Theta is equal to pi plus alpha. So pi plus alpha lie in which quadrant? This is pi in the third quadrant. So tan is always positive in first and third quadrant. So if we put the different values of n, then we get the angle in the first quadrant or third quadrant whenever alpha is acute. Is this clear? आपको हमेशा वो सेम इंटरवल में वो एंगल मिलता रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में. आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दीजिए. So it's mean this formula will give us the angle in the first and third quadrant whenever the alpha is acute. किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है in this general solution? जनरल सॉल्यूशन में डाउट है किसी को? नो सर. No. So please note down these formulas, then we will start the question. Done, sir. Done? Okay. Yes. Please note this question. Find the general solution. Find the general solutions of the following equations. First is sin theta is equal to root 3 pi 2. Okay, we have to find the general solution of the following equation. So first of all, we will write sin theta is equal to sin, this is what, pi by 3. Okay, always write sin theta is equal to sin pi by 3. Now what is the formula? When sin theta is equal to sin alpha? One n power pi n by plus minus 1 to the power alpha. And pi plus minus 1 to the power n into alpha. So from here we will get theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. Alpha is what? Pi by 3.
Any doubt in this? No, sir. Right? देखिए we have 4 quadrants, so √3/2 पॉजिटिव है, so first angle first में होगा, second में होगा in case of sine. But और दोनों आंसर करेक्ट हैं, अगर आप सेकंड में लेते वो भी करेक्ट होता, बट ऑलवेज चूज द स्मॉलर एंगल. ठीक है, ऑलवेज चूज द स्मॉलर एंगल. आपका आंसर पे एनसीईआरटी से मैच हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, आप सॉल्व करेंगे वो मैच नहीं होगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. सो दोनों क्वाड्रेंट थे, दोनों में एंगल आ रहा था, ऑलवेज चूज स्मॉलर एंगल. अगर नेगेटिव भी है तो स्मॉलर जो भी एंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव यहाँ है और यहाँ है, तो आप चूज करेंगे दिस स्मॉलर वन. ये भी करेक्ट है, बट फिर सबका आंसर सेम होगा, एनसीईआरटी से मैच हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे फिर, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं. टेक दिस कि जो भी स्मॉलर एंगल है प्लीज आप उसको यूज करिएगा. सो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड वन. सेकेंड इज cos theta is equal to 1/2. Please tell me the answer. n pi plus minus pi by 3. 2n pi plus minus Pi by 3. pi by 3. सबका आंसर यही है. Yes. खसफल, युवराज, मानस, हमाद Yes, yes. and यश. यश Yes. सेम. Yes, sir. ओके. हमाद, चैट बॉक्स को यूज कीजिए प्लीज, मुझे नहीं पता चल रहा आपको समझ में आ रहा है या नहीं. हमाद. ओके, हमाद से कांटेक्ट नहीं हो पाता है. मॉर्निंग में हो रहा था कांटेक्ट, अब नहीं हो रहा. चलिए कोई बात नहीं. ठीक है, सेम क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप, थर्ड वन. नेक्स्ट इज tan theta is equal to 1/√3. Please try this. N pi plus pi by 6. pi by 6. सबका आंसर सेम है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सबका हो गया. यश, युवराज. Yes, sir. ओके, युवराज हो गया. Yes, sir. ओके, देन ट्राई फोर्थ क्वेश्चन. लास्ट तक इसके बाद कुछ नहीं करेंगे ना. नहीं, बस दैट इज द फाइनल आंसर. ठीक है. 2 sin theta plus 1 is equal to 0. Excuse me, sir. Yes, युवराज. Sir, tan theta is equal to 1/√3 में आंसर में हमने प्लस माइनस पाई बाय 6 क्यों नहीं लिया? नहीं, फॉर्मूला था नहीं ना, फॉर्मूला ये था, थीटा इज इक्वल टू, चेक द फॉर्मूला, प्लस अल्फा. Okay, sir. Got it. ठीक है. N pi Next. plus 1 to the power n plus 1 pi by 6. थीटा इज इक्वल टू n pi plus minus 1 to the power n into N plus 1. N plus 1. n plus 1 का पावर में. हाँ जी. ओके, n plus 1 and further answer Pi by 6. pi by 6. मैंने Okay, anyone? -1 into -1 करके n plus 1. ये -1 है. अच्छा, वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना. minus Okay, any other answer? Any So other answer? 7, to this? so 7 pi by 6 plus 2 pi n हाँ, 7 pi by 6 plus 2 pi n. 2 pi n. Yes. 2 pi n क्यों आएगा? चलिए अब देखते हैं इसमें. So we have this one, sin theta is equal to what? -1/2. Now we will check that this sin theta is negative in which quadrant. This is the first one, this second. So sin is negative in this and this. तो मैंने आपसे कहा था स्मॉलर हम ले लेंगे, है ना, तो उससे हमारा आंसर मैच हो जाएगा बुक्स के साथ, वरना फिर आप कंफ्यूज रहेंगे दैट द आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो हम इस क्वाड्रेंट में आगे लेंगे. सो फर्स्ट, ये शायद मैंने बताया आपको, 1/2 पहले फाइंड कीजिए. 1/2 कब आएगा? pi by 6. Now we need the angle in this quadrant. ये कितना होता है? pi. हम क्या करेंगे? pi plus pi by 6 कर देंगे. कितना आ गया? 7 pi by 6. So we can say sin theta is equal to sin 7 pi by 6. ठीक है, और भी देखते हैं और आंसर्स क्या आ रहे हैं, सब हम डिस्कस करते हैं. सबको इतना समझ में आ गया? हाँ, इतना सबको समझ में आया कि -1/2 था, तो हमने क्वाड्रेंट चेक किया. वी हैव दीज टू क्वाड्रेंट्स. मैंने कहा था कि आप कहीं भी ले सकते हैं,
बट बेटर है आप स्मॉलर क्वाड्रेंट में ले लें तो आपका आंसर मैच होता रहेगा फिर। ठीक है, तो ये हमें क्वाड्रेंट मिल गया, इसमें हमें एंगल चाहिए तो आपको बताया आई थिंक कि पहले आप सिर्फ 1/2 के लिए वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 1/2 के लिए π/6। फिर आपको किस क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए था, थर्ड में, π + π/6 कर दिया। तो ये कितना आ गया, दिस इज sin थीटा इज इक्वल टू sin 7π/6। इस स्टेप में किसको डाउट है, युवराज, यश, हम्माद, मानस, हर्षित, इस No स्टेप doubt, में sir. किस, नो डाउट। खसवल आपका आंसर भी अभी डिस्कस करते हैं। Okay, अब हमारे फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n into alpha. Now in this case, what is alpha? Alpha is 7π/6, so we get this 7π/6। ये क्लियर, वो किसी को डाउट है? अब ये किसी स्टूडेंट का आंसर था बट उन्होंने आई थिंक 2n पाई कहा था। ये 2n पाई कैसे आ रहा था, 2n पाई कैसे आ रहा था ये? शायद ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ठीक है, फर्स्ट आंसर दिस। खसफिल आपने जो किया है n+1, दैट इज आल्सो करेक्ट, वो भी ठीक है। मैंने sin -π/6 हाँ, कर मुझे दिया। वो आपने -5/6 लिया, फिर आपने -1 से मल्टीप्लाई करके उसको n+1 कर दिया, सो Yes. दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, Okay, sir. ओके। किसी को भी डाउट है बच्चे प्लीज बता दीजिए, क्योंकि ये अभी बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। तो अगर आपको यहाँ डाउट है तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट इज cosec थीटा इज इक्वल टू -2। प्लीज फाइंड द आंसर। n pi plus to the power n plus 1 pi/6. आंसर इज N pi plus -1 to the power n plus 1 pi/6. +1 -1 to the power n 7π/6, या फिर आपका वो आ रहा होगा n+1 π/6, है ना? Yes. किस पर Yes. वो था करेक्ट। प्लीज चेक कीजिए। कॉसेक में हमारे पास फॉर्मुलेस नहीं है, हमने लिखे नहीं कॉसेक में फॉर्मुलेस, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। सो कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू साइन, देन फाइंड द आंसर। हो गया सबका? युवराज, मानस, यश, हम्माद, हर्षित, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. हर्षित, हर्षित एंड युवराज, ये सर हाँ पुराने आंसर में है ना, सेम क्वेश्चन है वो। ओके, हम्माद हुआ नहीं हुआ, हम्माद का कोई कमेंट नहीं आता है। नेक्स्ट ट्राई दिस cos तो वैसे 3। वो चेन में, क्योंकि वो जो जनरल फॉर्मूला था वो साइन थीटा के टर्म्स में था, हमने तो उसके मतलब उल्टे टर्म्स में निकाला है ना। हमारा जो फॉर्मूला है वो साइन का है ना, क्वेश्चन था हमारा cosec का, cosec थीटा इज इक्वल टू -2, यस सर। है ना। चलो सपोज हमारे पास है cosec थीटा इज इक्वल टू 2, सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन एंड अ स्टूडेंट क्या करता है, वो साइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, वो कहता है कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, π/6। तो अगर ये थीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, यस है ना। तो cosec को हमने चेंज कर दिया साइन में, बात तो वही है। साइन के लिए जो एंगल होगा वो cosec के लिए वैलिड होगा, क्योंकि बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके सर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें तीन ही फॉर्मुलेस करने हैं। whenever you have to find the other three ratios, तो आप उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। Next try this, cos 3 theta is equal to -1/2. Please find cos 3 theta is equal to -1/2. 2n pi/3 plus minus 2 pi/9. Answer is theta is equal to 2n pi by 3 plus Plus minus
2 pi 2 by pi by 9 9. and n belongs to any integer. Integer. Kaspal, great. This is the answer. Excuse me, sir. Yes, Yuvraj. The 2 in pi के नीचे 3 क्यों आया divided by 3? चेक कीजिए, आप सॉल्व कीजिए. देखिए, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? सर जब cos 3 थीटा को is equal to cos थीटा by 3 लिया, उसके बाद सर cos थीटा is equal to cos pi by 9. Okay, चलिए इसको ट्राई करते हैं. We have this cos 3 theta is equal to minus 1 by 2, है ना? So again, this is first second. Now cos is negative in which quadrant? This one and this one, Yes sir. है ना? So we need the angle in which quadrant? हम फाइंड करेंगे सेकंड में, है ना? क्योंकि स्मॉलर हमें यहाँ मिलेगा. Yes sir. So 1 by 2. Cos में 1 by 2 कब आता है? pi Pi by? 2 plus I think pi by 3. yes sir. है ना? Cos में pi by 3 आता है. Now we need the angle in the second quadrant. तो हम कैसे शिफ्ट करेंगे second quadrant में? Pi by 2 plus pi by 3. नहीं, मैंने हमेशा क्या कहा है? Always use pi and 2 pi. Oh sorry, pi Because- minus pi by 3. हाँ, pi minus pi by 3. So what we get? 2 pi by 3. 2 pi by 3. So we will write this cos theta is equal to cos 2 pi by 3. इतना क्लियर वो? Yes sir. है ना? Always use pi and 2 pi. क्योंकि pi by 2 यूज कर लिया, वो रेशियो चेंज हो जाएगा. अब अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं cos 2 pi by 3, then this value is minus 1 by 2. ठीक है? Yes. कैसे होगा? कैसे होगा ये भी देख लेते हैं. Pi minus. This is pi, so cos remain cos pi by 3. This line the second quadrant negative. कितना आ गया? minus 1 by 2. जी युवराज. ये तो आ गया मेरा plus minus 2 pi by 9. बट मेरा 2 n pi आ रहा है, मतलब 2 n pi by 3 से आएगा, वो नहीं समझ. देखते हैं. 3 theta is equal to कितना हो गया? 2 n pi plus minus alpha. Alpha is what? 2 pi by 3. So ये थीटा नहीं. थीटा नहीं होगा, जो एंगल होता है वही आता है यहाँ. अच्छा So सर व्हाट angle is- मैंने क्या किया, मैंने थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस हाँ. माइनस 2 पाई बाय 9 कर लिया, मतलब 3 को पहले उधर ले गया मैं. अच्छा जी, यहीं शिफ्ट कर दिया यस सर. आपने. ऐसा कुछ किया cos 2 theta is equal to cos 2 pi by, हाँ, this step is incorrect. एंगल है ना. अगर सपोज मेरे पास ये cos 30 डिग्री is equal to cos, सपोज ये मेरे पास 60 by 2, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने 30 शिफ्ट कर दिया, that cos 1 degree is equal to cos 60 by 2 into 30. यस ठीक है सर. युवराज, ऐसा नहीं हो सकता. हाँ जी सर. ठीक, ओके थैंक यू सर. ओके, यू वेलकम. कोई इशू नहीं है. 10th के बाद ना छोटे मोटे डाउट्स तो रहते हैं. 1 और 2 मंथ होंगे, उसके बाद फिर नहीं होंगे बाद में. So we get theta is equal to what? This is 2 n pi by 3 plus minus 2 pi by 9. Let's try another question. Next is I think fourth or fifth question. This tan 3 theta is equal to minus 1. Please try this. n pi by 3 plus 3 pi by 12 is 2. G Kaspal, what's the answer? Theta is equal to n pi by 3 plus pi 3 by pi 12. 12. pi by 12 Uh, and belongs to any teacher. the 3 pi by 12. This is 3 pi by 12.
yes. Yes. ओके, फिर वो पाई बाय 4 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। Now, tan 3 theta is equal to 1. So we will check the quadrant. Tan negative किस में होता है? In this one and this. So we will take this quadrant. So पहले हम 1 के लिए find करेंगे, कितना आएगा? Pi by 4. Now we need the angle in this quadrant. तो कितना आ जाएगा? Pi minus pi by 4. तो कितना हो जाएगा ये? 3 pi by 4. इतना क्लियर हो गया सबको? So we can write tan 3 theta is equal to tan 3 pi by 4. So this can be written as 3 theta is equal to n pi plus alpha. Alpha means 3 pi by 4. So this will give you theta is equal to n pi by 3 plus pi by 4. ठीक है, वो 3 cancel हो गया. So this is the answer. Any doubt in this? No, sir. Okay. ठीक है. So we will start next question. Next is type second of this type. हमने second mark कर दिया है ना, so third type. इससे पहले हमने कौन सा टाइप लिया था? टाइप सेकंड और फर्स्ट? Second. सेकंड लिया था. So this is type third. Next is on finding the general solution. On finding the general solution. On finding the general solution of the equation reducible to the form sin theta is equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha, tan theta is equal to tan alpha. ठीक है? So we have to find the general solution of the equation, which is equation reducible to this form. In these types of question directly इस form में नहीं होगा. We have to convert the question. We have to reduce the question in this form. For example, we have the first question. Solve the equation sin theta plus sin 3 theta plus sin 5 theta is equal to 0. So this ये जो आपका क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में नहीं है. We have to reduce the question in this form. उसके बाद हमें सॉल्व करना है फिर. ठीक है, प्लीज कीजिए इसको. Theta is equal to n pi by 3, where n belongs to integer, or n pi plus minus pi by 3. Great, Kaspar. This is answer. ठीक है. प्लीज देखिए. We have to solve this equation. तो देखिए इसमें हम combine कर रहे हैं sin theta plus sin 5 theta. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी देखेंगे हम. ठीक है, sin 3 theta हम देखेंगे. theta and 3 theta को हमने combine क्यों नहीं किया. Now Yuvraj, what is the formula of sin theta plus sin 5 theta? Sin A plus sin B. Formula of sin A plus sin B. Sin A cos B plus sin B cos A. नहीं 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. वो तो sin A plus B था ना.
Yes, sir. तो ये है साइन ए प्लस साइन बी, Oh, ठीक है? okay, sir. हाँ, सो वी नो दैट दिस फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, So sin A plus B था. वो साइन ए प्लस बी था. सो दिस इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड दिस इज कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 2 साइन a plus b, so a theta plus 5 theta 6 theta, 6 by 2 is 3 theta plus sorry into cos, फिर क्या हो जाएगा? a minus b क्या हो जाएगा? सॉरी cos a minus b, so cos तो 2 थीटा आ गया. 2 theta आ गया plus sin 3 theta is equal to 0. now take common, so common आ जाएगा sin 3 theta, तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos 2 theta plus 1 is equal to 0. So we will get sin 3 theta is equal to 0 or 2 cos 2 theta plus 1 is equal to 0. So first equation यहाँ से find हो जाएगी, second यहाँ से हो जाएगी. तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्टली लिखने n pi होता है ना, sin 3 theta is equal to 0 n pi. So theta is equal to n pi by 3 आ गया. और ठीक है, n belongs to any integer. ये क्या हो जाएगा? cos 2 theta is equal to minus 1 by 2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? cos 2 theta is equal to 1 by 2 कब आता है? cos pi by 3. किस कोऑर्डिनेट में? सेकंड में. सो pi minus pi by 3, सो cos 2 pi by 3, तो 2 थीटा आ गया यहाँ से. सो 2 थीटा आ गया हमारा यहाँ से. 2 थीटा इज इक्वल टू 2 n pi प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज 2 pi by 3. सो शिफ्ट दिस 2 थीटा आ गया n pi प्लस माइनस pi by 3 where n belongs to any integer. ठीक है, तो इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन था वो रिड्यूस जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने उसको रिड्यूस किया है. तो हमने क्या करा? अब हमने इन दोनों को क्यों कंबाइन किया? 3 को क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 को अगर हम करते तो हमारे पास कितना आता है? 3 plus 1 4, 4 by 2 is 2, 2 आता और 1 आता, तो वो फिर कॉमन नहीं आता 5 में. ठीक है, अगर हम इसको अगर हम कंबाइन कर देते तो हमारे कुछ भी कॉमन नहीं आता, इसलिए हमने 5 और थीटा को कंबाइन किया सो दैट वी विल गेट sin 3 थीटा कॉमन. सो एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Sir, hello जी, sir. जी कृष्पल. Again, sir, please. जी कृष्पल. सर जी मेरा नाम स्लो था सर जी. हाँ नुबू मैं अभी बस बात करता हूँ आपसे, है ना, 1 by 1 बात करते हैं. हाँ, जी कृष्पल, क्या कह रहे हैं? Sin थीटा और 3 थीटा को कंबाइन करके हमें मिलेगा 2 थीटा ना सर? हाँ, 2 थीटा मिलेगा. फिर अगर sin 5 थीटा को 3 और 2 में कन्वर्ट करके 2 को कॉमन लेके फिर ऐसा हो सकता है सर? फिर आप 5 को ब्रेक कर रहे थे 3 plus 2 में, तो एक टर्म आती sin 3 cos 2 cos 3 sin 2, तो sin 2 तो कॉमन आ जाता, वो 3 रह जाता. ठीक है, हमें क्या चाहिए? वी नीड द टू रेशियोज जिनका प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो वहां वो फैक्टराइज नहीं होता फर्दर फिर. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है. हाँ, अब नोबू क्या कह रहे थे आप? सॉरी, वो खसपल से मैं बात कर रहा था. सर जी मेरा नेट स्लो था सर जी. अभी अभी ज्वाइन किया सर जी मैंने. जस्ट अभी किया है. नोबू लास्ट क्लास में थे आप? आई थिंक नहीं थे. कल था सर जी. नहीं मेरी सुबह था क्लास सर में. जी. हाँ, मॉर्निंग में थे ना? था सर जी. हाँ, 12 बजे था. हाँ, लास्ट वीक थे संडे? नहीं था सर जी. हाँ, तो अभी नोबू क्या करना है आपको ना? उसी क्लास में आना है. आई थिंक आपके काफी टॉपिक मिस है ना, आप स्टार्टिंग में ही आए थे. तो आप ऐसे कीजिए, वो मॉर्निंग क्लास ही कीजिए, उसमें हम ये पूरे स्टार्टिंग से कर रहे हैं. उसके बाद जब दोनों बैचेस में सेम सिलेबस हो जाएगा तो फिर आप इसमें भी आ जाइएगा. ओके सर. ठीक है, तो आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कीजिए अभी, बट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वीक भी आपका मिस हुआ एक क्लास, ठीक है सर. है ना? मॉर्निंग में आइए, उसमें हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं फिर. मॉर्निंग 12 बजे सर जी. हाँ वही, सॉरी, 12 बजे. ओके सर. ठीक, ओके. ओके. और किसी को कोई डाउट है?
हाँ यश, युवराज, हमाद, No, sir. नहीं. No, no. Okay, solve the equation. Solve the equation cos theta plus cos 3 theta minus 2 cos 2 theta is equal to 0. Try this question. हो जाए हम ना Jinubu, please try this question. Cos theta plus cos 3 theta minus 2 cos 2 theta is equal to 0. So 2n plus 1 pi by 4. Answer is 2n plus 1 pi by 4. ठीक है, एक आंसर और आ रहा होगा, एक Sir, आंसर 2n और. pi. 2n pi, बिल्कुल ठीक है. Sir, 2n pi plus 1 pi by 4 or 2n pi, बिल्कुल ठीक है, this is the answer. where n belongs to n integers. हाँ सबका हो गया. युवराज, यश, युवराज, यश हो गया. हाँ युवराज, सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन. ओके ठीक है युवराज, आई थिंक यश का भी हो गया. सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. यश हो गया ना ये क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ जी यश हो गया. Yes, sir. ओके ठीक है. Then try next one. Next is solve the following equations. Next is solve the following equations. First is sine 2 theta plus cos theta is equal to 0. Please solve this equation. Two n plus 1 pi by 2 or n pi plus minus 1 to the power n 7 pi by 6, where n belongs to any Theta is teacher. equal to 2n plus 1. Sir, pi by 2 2n plus 1 pi by 2 or or n pi plus n pi plus minus 1 to the power n and 7 pi by 6. 7 pi by 6. ओके अभी चेक करते हैं इसका आंसर. प्लीज सब इसको कंप्लीट कीजिए. देखिए व्हाट्स आंसर ऑफ दिस. So 3 pi by 2 and 11 pi by 6. ओके चलिए चेक करते हैं व्हाट्स आंसर. सो sin 2 theta plus cos theta is equal to 0. So apply the formula sin 2 theta, which is 2 sin theta cos theta, and this is plus cos theta is equal to 0. So take cos theta common. So we get 2 sin theta plus 1 is equal to 0. So we will get cos theta is equal to 0, or 2 sin theta plus 1 is equal to 0.
सो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 n belongs to any integer, and from this we will get sin theta is equal to -1/2. So we will get sin theta is equal to, now again check the quadrant, we need this in the third quadrant. π/2 कब होता है? π/6. So pi plus π/6 हो जाएगा, तो sin pi plus π/6. So this is sin theta is equal to what? Sin 7 π/6. ठीक है, 7 π/6. So theta यहाँ से आ जाएगा, this is n pi plus -1 to the power n into alpha, where alpha is what? 7 π/6. Any doubt in this question? Any doubt No, in this one? Okay. No, sir. Try next pair. Next is second part of this, sin 3 theta plus cos 2 theta is equal to 0. Please try this question. So 2n pi/3 minus pi/10 and Just a second, just a second. So theta is equal to 2n 2 pi/3 minus pi/10. 2n pi/3 minus pi/10. Yes. Okay. And second, 2n pi minus pi/2. 2n pi minus pi/2. Yes. Okay, हाँ आंसर तो ठीक है. Answer is 2n pi/3 minus pi/10. ये भी ठीक है. ये 2n pi/5. इसको भी मैं चेक करता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज है. यहाँ pi/5 है, pi/3 नहीं आ रहा है, pi/5 आ रहा है. This one is correct. प्लीज ये चेक कीजिए. आई थिंक ये 5 होना चाहिए. Yes, ये yes, it's है ना, 5, ये yes, sir. 5 होगा क्योंकि ये भी Yes, sir. 10 जब आ गया. Yes, sir. So final answer लिखा था तो उधर 3 की जगह मैंने हाँ. गलती से 5 बना दिया. ठीक ठीक ठीक. सो युवराज, यश, हम्माद, मानस, खसपल हुआ सबका. युवराज हो गया. ओके. यश No, sir. नहीं हुआ अभी, कोई बात नहीं. खसपल हो गया क्वेश्चन. खसपल हो गया क्वेश्चन.
कर रहे हैं अभी। ओके देखिए यश, देखिए यश, हमारे पास जो साइन का फॉर्मूला होता है दैट इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा। कॉस जो होता है दैट इज टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ अगर हमें कहीं अल्फा को शिफ्ट करना है इन दिस वन, इसमें अगर हमें अल्फा को शिफ्ट करना है तो यहाँ हो सकता है पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ जब हम शिफ्ट करेंगे ना तो माइनस वन टू द पावर एन हमेशा ये उसके साथ रहेगा, तो वो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। So whenever we have the option that we have to convert the sine or cos, then we will always opt for cos. ठीक है, हम चाहेंगे हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो cos में ही रहे। So cos 2 थीटा is equal to minus sin 3 थीटा। युवराज इतना क्लियर है? युवराज? Yes, sir. Okay, and Yash, what is sin minus theta? Sin theta. यश फॉर्मूले टिप्स पे होनी चाहिए ना, अब तो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। व्हाट इज sin minus theta? Minus sin theta. Minus sin theta है ना, गुड। So this is what this can be written as sin minus 3 theta. Okay. Now this is cos 2 theta is equal to, now this, what this can be written as cos, this correct, इसको भी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, माइनस साइन 3 थीटा इसको रखते हैं, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज पाई बाय 2 प्लस 3 थीटा? यश? Minus 3 माइनस 3 theta. हाँ जी, Minus 3 theta, sir. minus sin 3 theta है ना, so it's mean in place of this we can write this pi by 2 plus theta, so this is okay. Now cos 2 theta is equal to this one, compare this with the formula cos x is equal to cos alpha। ठीक है, हमने x लिख दिया, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। cos x is equal to cos alpha, फॉर्मूला क्या होता है? x is equal to 2n pi plus minus alpha। So now in this case ये क्या हो जाएगा? 2 theta is equal to what? This is equal to 2n pi plus minus alpha. What is alpha? Alpha is pi by 2 plus 3 theta. Okay. So we will take two sign, positive and negative. So first we have this 2 theta is equal to 2n pi plus pi by 2 plus 3 theta. इसको सॉल्व करते हैं। So ये यहाँ शिफ्ट कर दें, 2 theta minus 3 theta is equal to 2n pi plus pi by 2, and we can say minus theta is equal to what? 2n pi plus pi by 2. So you can say theta is equal to minus 2n pi minus pi by 2. ठीक है, first answer is this one, minus 2n pi minus pi by 2, n belongs to any integer. अब कुछ बुक्स में ये भी करते हैं कि माइनस n को m पुट कर देते हैं, so that's a choice, this answer is correct. तो first answer हमें ये मिल गया। Second हमारा क्या हो सकता है? Select this negative, so this is 2 theta और 2 theta is equal to 2n pi minus pi by 2 minus 3 theta. तो ये कितना हो जाएगा? 5 theta is equal to 2n pi minus pi by 2. So ये आ गया हमारे पास theta is equal to 2n pi by 5 minus pi by 10. So we get these two answers. ठीक है, so please check कीजिए, किसी को इसमें डाउट है? Here also n belongs to any integer. ठीक, यहाँ एक स्टेप चाहें तो कर सकते हैं, that minus n is equal to m, so वो पर्सनल डिसीजन है आपका। These two are the answer.
किसी को डाउट है इसमें दिस क्वेश्चन? नहीं. यश हो गया नोट? Yes, sir. Okay. So we will start next question. Next is, again I think this is a fourth question, and this is 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0. Please try this. Sorry, this is 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0. Please try. So n pi plus minus 1 to the power n 7 pi by 6. Theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n 7 pi by 6. Yes. It is plus minus. Okay. Okay. ठीक है, चेक करते हैं अभी आंसर्स. और किसी का आंसर है? युवराज, कसफल, मानस, यश, हमाद. एनी अदर आंसर? No, sir. नहीं. ओके. देखिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फैक्टराइज. हमें इसे फैक्टराइज करना है इन दिस केस. सो cos स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा तो डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो सकते हैं. क्या कर सकते हैं हम? ये sin थीटा है तो ये भी sin थीटा में हो जाए. युवराज, ये कैसे कन्वर्ट होगा साइन में? युवराज, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा साइन में? सर दो तरीके हैं. एक तो हाँ? सर एक तो वो वाला cos स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से, ठीक है. और सेकंड? एंड सर सेकंड जो पीछे हमें करवाया था आई बाय 2. सर जो 2 cos स्क्वायर थीटा वाला अच्छा अच्छा फॉर्मूला अच्छा अच्छा, उससे. ठीक है, इससे करते हैं हम. ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से इज इक्वल टू 1. इसको यूज करते हैं. सो वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. So what we can write, 2 into this is 1 minus sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0. So open this bracket, this is 2 minus 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0. And this complete multiply with this negative, so we get 2 sin square theta minus 3 sin theta and plus 2 theta is plus 2 is equal to 0. Now factorize this. जैसे हम normally करते हैं ना equations को factorize, हम exactly वैसे ही इसको करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 2 sin square theta. सर हमने ये वाला स्टेप कैसे किया? कौन सा? दिस वन. जो हमने सर जो ये, हाँ ये जो सर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा हाँ करा ये है, यही है, हमने इसको सिर्फ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया. लेट दिस बी तो सर फर्स्ट. वो -2 नहीं होगा वहाँ पे? Minus अच्छा, 2. सॉरी सॉरी, दिस इज माइनस. Sir, sir. Hello, sir.
जी खसपल, बस खसपल 1 मिनट। ठीक है, हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? सो दिस कैन बी डन एज -4 sin थीटा प्लस sin थीटा -2 is equal to 0. So take common 2 sin theta sin theta minus 2 plus 1 sin theta minus 2 is equal to 0. जी खसपल बताइए। इसका sin x इक्वल टू 2 आ रहा है, बाद में उससे हम नहीं लेंगे ना शायद। हाँ वो नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है दैट sin theta is equal to 2, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा हमारा। एक ही सोल्यूशन। ठीक, हाँ एक ही होगा। सो यहाँ से हो जाएगा 2 sin theta plus 1 sin theta minus 2 is equal to 0. So either this part is 0 or this part is 0. So we get this one, 2 sin theta plus 1 is equal to 0. But this can't be equal to sin theta minus 2 जो है, that can't be equal to 0. है ना, हमें पता है because the maximum value of sin is 1. So 2 तो नहीं हो सकता. So ये 0 नहीं होगा. इन दोनों का subtraction can never be 0. तो इन दोनों का multiplication अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब only this part can be 0. युवराज, यश, हमाद, क्लियर हुआ ये? यस Yes, सर। sir. ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट? -1/2। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा ये? अगेन किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या लिख देंगे हम? साइन पाई प्लस पाई/6। तो ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 7π/6। साइन 7π/6। सो ये कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू n pi plus -1 to the power n into 7π/6. This is the answer. डन सर। Done. So try Yes, sir. next. Okay. अब क्लियर हुआ? तो हम अब क्या कर रहे हैं? फैक्टराइज कर रहे हैं क्वेश्चंस को। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, देखिए कैसे फैक्टराइज हो सकता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ इज cot square theta plus 3 by sin theta plus 3 is equal to 0. Please try this. Cot square theta plus 3 by sin theta plus 3 is equal to 0. Find theta. So n pi plus -1 to the power n pi by 6 or n pi Okay. plus -1 to the power n pi by 2, where n belongs to any teacher. Answer is this. Theta is equal to n pi plus -1 to the power n 7 pi by 6. अच्छा 7 pi by 6। वो डिपेंड करता है, आपका भी शायद ठीक होगा क्योंकि वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है क्या एंगल लिया है। एंड 3π/2, यही आंसर। दूसरा एक्सक्यूज मी 3 सर। pi by 2 नहीं है मेरा, n pi plus -1 to the power n pi by 2। n π/2 अभी चेक करते हैं। ठीक है, हाँ यस यस युवराज। सर मेरा कोसेक थीटा +1 इज इक्वल टू 0 और कोसेक थीटा +2 इज इक्वल टू 0। तो सर कोसेक, इसमें वाली हाँ तो कैंसिल हो जाएगी एंड जो कोसेक थीटा +1 इज इक्वल टू 0 है तो मतलब सर कोसेक थीटा की वैल्यू -1। लेकिन कोसेक का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है ना, सो चेंज दैट कोसेक इनटू साइन, देन अप्लाई द फॉर्मूला। You have the formula of sin, cos and tan. So please convert all this cos, cot into सर 3 pi sin. by 2 आ रहा है। अरे
ठीक है. अरे sir, sign positively. Okay. Sir, my Okay. answer is also the same, but n pi minus 1 to the power n. My answer n is this. pi minus. Minus, yes. माइनस यहाँ से आ रहा होगा है ना, तो वो n+1 हो जाएगा. यहाँ तो नेगेटिव नहीं आ सकता, उसको आप ऐसे लिख दो ना, जो भी था आपका इंटू -1, तो वो यहाँ पावर ऐड हो जाएगी. सर मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू Okay, sir. -1 आ रहा है. साइन थीटा अब देखते हैं. सो दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec थीटा plus 3 is equal to 0. Now, what is this cot square theta? This is cosec square theta -1 plus 3 cosec theta plus 3 is equal to 0. So, ये क्या आ गया? Cosec square theta plus 3 cosec theta plus 2 is equal to 0. So, this is cosec square theta plus this is कितना हो जाएगा? 2 cosec theta plus cosec theta plus 2 is equal to 0. So from this we will get cosec theta plus 2 plus 1 cosec theta plus 2 is equal to 0. So from this we will get cosec theta plus 1 is equal to 0 or cosec theta plus 2 is equal to 0. So sin ही हम फाइंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये? cosec theta is equal to -1, इसका मतलब sin theta is equal to -1. और यहाँ से आ जाएगा cosec theta is equal to -2, इसका मतलब sin theta is equal to -1/2. ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको फिर. तो ये हमारे sin theta is equal to -1, so we can write sin theta is equal to what? Sin 3π/2. So कितना हो जाएगा? theta is equal to n pi plus -1 to the power n into alpha, इसका मतलब 3π/2. तो ये तो मैच हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. sin theta is equal to -1/2. कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में. तो sin pi plus π/6. So कितना आ गया? sin theta is equal to sin 7π/6. So theta कितना आ गया? n pi plus -1 to the power n into alpha. Alpha means 7π/6. ठीक है, दिस आंसर. और शायद जिनका नेगेटिव आया था उन्होंने -π/6 लिया था, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. उससे n+1 हो जाएगा फिर. ठीक है. Yes. So both answer are correct. 7π/6 and -n+1 both are correct. Yes, sir. Okay. So any doubt यहाँ तक? No, sir. No. नो सर. We'll try the next type of questions. Next is solve the following equations. Solve the following equations. So first is tan theta plus tan 2 theta plus tan theta tan 2 theta is equal to 1. There's a next type of question. 2 theta is equal to 1. Please try this. देखिए कैसे कर सकते हैं आप इसको. N belongs to an integer. Hello, sir. जी कैस्पेल हो गया सॉल्व. N pi/3 n pi/3 and plus pi 12. plus pi/12. 12. This is the answer. Great. This is the answer. n pi/3 plus pi/12.
और किसी का हुआ? मानस, यश, युवराज? सर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है कि tan a plus tan b? हाँ, tan a plus tan b आ जाता है. वी हैव दिस फॉर्मूला tan. आप बहुत क्लोज हैं युवराज. वी हैव दिस फॉर्मूला tan a plus b, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. इसे यही ढूंढ रहा था मैं, मुझे मिल नहीं रहा था. Yash, Manas, Yuvraj, who was all? Yes, sir. N pi by 3 and n pi minus alpha. N pi N by 3 plus I think pi by 12. Yes, sir. यही आ रहा है. ये आ रहा है किसका? यश का? Yes, sir. Okay, great Yash. Please again. So we have this formula. So देखिए हमारे पास जो एंगल है tan थीटा, कुछ आइडिया में मिल रहा है. देखिए थीटा, 2 थीटा, फिर थीटा 2 थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन में है. तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाता है, देखिए यहाँ से हमें हिंट मिल रही है. इफ वी गेट लाइक दिस tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, अगर हमें ये मिल जाता देन वी विल गेट द फॉर्मूला tan थीटा प्लस 2 थीटा. हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो कैसे हो सकता है? tan थीटा प्लस 2 थीटा हम यही रखते हैं, ये पार्ट हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा is equal to 1 minus tan theta tan 2 theta. So what we will get? We will get tan theta plus tan 2 theta by 1 minus tan theta tan 2 theta is equal to 1. इस स्टेप में डाउट है किसी को? देखिए ये हमने सिर्फ शिफ्ट किया इसको, एंड वी कैन से दैट दिस इज मल्टीप्लाइंग विद 1. तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा. युवराज, मानस, यश, क्लियर हुआ ये? एक्सक्यूज मी सर. या सर लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से tan a plus b की वैल्यू हम 1 कैसे ले रहे हैं? नहीं, हम 1 नहीं ले रहे हैं. देखिए हमने युवराज क्या किया? वी हैव शिफ्टेड दिस टू राइट साइड, सो वी गेट दिस tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा. यस सर. है ना? ये सिंपल स्टेप है, सिर्फ शिफ्ट किया है तो माइनस हो गया. सर लेकिन वो वहां पे tan a plus b से मल्टीप्लाई नहीं होगा जब हम उसको राइट पे लेके जाएंगे? इसको नहीं, सर जैसे फॉर्मूला है tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. इसको हम हटा देते हैं अभी. ठीक है, सो हमने युवराज सिर्फ क्या किया है अभी, दैट वी हैव शिफ्टेड. ये यहाँ प्लस हो रहा था ना, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. ओ ओके सर. हाँ जी. ठीक है, नाउ वी कैन से दैट दिस कंप्लीट इज मल्टीप्लाइंग विद 1. यस सर. तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा. ये तो सर tan a plus b आ गया सीधा. ये tan a प्लस भी आ गया, ये हो जाएगा tan, दिस इज थीटा प्लस 2 थीटा tan 3 theta is equal to 1. इज इक्वल टू 1 हो गया.
ये हो गया tan 3 theta is equal to 1. So 3 theta is equal to tan of pi by 4. Pi by 4. So we know that 3 theta is equal to what? N pi plus alpha. So here alpha is Pi. what? Pi by 4. So So we n will pi get by 3 plus pi by 12. ठीक है युवराज. Yes, sir. Any doubt in this? ठीक है, next और क्वेश्चन करें same type. Next, second is tan theta, tan 2 theta, tan 3 theta, tan theta, tan 2 theta, tan 3 theta. Now try this question. So n pi by 6 where n belongs to integer. Theta is equal to n pi by 6 and belongs to any integer. Okay, I think this answer is correct. n pi by 6 नहीं आ रहा. I think n pi by 3 क्यों आ रहा है? Will you please check it again? Yes, I'll check it again. Pi by 3 आना चाहिए. And Yuvraj, Khuspil, Manas, Yash, Yes, sir. Yes, sir. It's n pi by 3. and pi by 3. Right. Yes, sir. N pi by 3, sir. And pi by 3. Okay, this answer. Yuvraj हुआ? Yuvraj, Yash, तो मैंने Yuvraj. जी युवराज. तो मैंने आपको टाइप कर दिया था. अच्छा. ओके, सॉरी. यश हो गया? नो सर. नहीं.
ओके यश सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था अगेन देखिए थीटा 2 थीटा सो दिस इज ओके इसको लेफ्ट साइड रखते हैं बाकी हमें चाहिए डिनोमिनेटर में तो हम क्या करते हैं 3 थीटा वहां शिफ्ट कर देते हैं सो दिस इज tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा minus tan 3 theta. Now this is what tan theta plus tan 2 theta is equal to. Take common tan 3 theta. कितना हो जाएगा? Tan theta tan 2 theta minus 1. This is what tan theta plus tan 2 theta is equal to. Negative common ले लें. So tan 3 theta is equal to 1 minus tan theta tan 2 theta. So ये कितना आ गया tan theta plus tan 2 theta by 1 minus tan theta tan 2 theta is equal to minus tan 3 theta. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया tan theta plus 2 theta. तो ये कितना हो गया tan 3 theta is equal to what? Minus tan 3 theta. So take this on LHS. So कितना हो गया 2 tan 3 theta is equal to 0. तो ये कितना हो गया tan 3 theta is equal to 0. So ये कितना हो जाएगा 3 theta again वही same tan formula theta is equal to n pi and belongs to any integer and theta is equal to what n pi by 3. ठीक है यश बस एक क्वेश्चन और करेंगे क्लास होगा ठीक है लास्ट क्वेश्चन तो ये टॉपिक भी हो गया अब हमारे सिर्फ रह गया ग्राफ और जो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा पार्ट ठीक है वो दो हमें और कर रब करते हैं इसको यस सर डन ठीक है यश हो गया है ना रब कर रहे हैं पर यस सर Yeah, this is the last question. Last guy, I think third था. Then this solve the following equation. Solve the following equations. First is cos 4x is equal to cos 2x. Please solve कीजिए इसको. Cos 4x is equal to cos 2x. Excuse me, sir. Yes, Yuvraj. Sir, n pi by 4 plus minus 1 raised to power n x by 2 N pi by 4 by 4, okay. plus Plus minus 1 raised to power n x by 2. x by 2. Yes, I have a doubt in this answer. अभी देखते हैं ठीक है. Sir, n pi by 3 and n pi. N pi by 3 and n pi. Great. This is the answer. किसका मानस? Yes, sir, minus. Okay. युवराज देखते हैं इसको है ना हम कैसे सॉल्व करेंगे. युवराज, if we compare this question with our formula cos theta is equal to cos alpha, then theta is Hello, what? sir. 2n pi plus minus alpha. Hello, sir. Yes, Kaspal. Sir, n pi plus minus pi by 3 or 2n pi. देखते हैं अभी 2n pi अभी देखते हैं इधर. So 4x is equal to 2n pi plus minus 2x. So we will get
4x, अच्छा अब 2 वैल्यूज हैं हमारे पास है ना, सो 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x एंड 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। सो ये कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई and x is equal to n pi and belongs to any integer, and from here we will get 6x is equal to 2n pi, x is equal to n pi by 3 and belongs to any integer। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज दिस। ठीक, युवराज आपने कौन सा मेथड यूज किया है, इसको शिफ्ट तो, किया था उधर? तो मैंने पाई एक्स को पाई ले लिया, एक्स को अल्फा ले लिया, वहां गलती हो। अच्छा, ये नहीं करना है। तो मैंने 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा ले लिया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक, और किसके और डिफरेंट मेथड हैं? खसपल आपका क्या मेथड था? cos 4x को cos square 2x minus sin square 2x से 2 cos square x minus 1 ऐसा तो नहीं किया कुछ? क्वाड्रेटिक। cos square 2x ये तो नहीं किया? हाँ जी सर, 2 cos square x, 2 cos square 2x 2 cos square 2x minus 1 is equal to cos ये cos 4x को आपने ये लिखा 2 cos square 2x minus 1। ओके ओके, माइनस 1 भी है। हाँ So जी you have applied, I think, this formula 1 plus cos 4x is यस equal to 2 cos square 2x। ओके ओके, आपने ये अप्लाई कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 cos square 2x और इसको शिफ्ट कर दिया ना। हाँ जी सर, अच्छा देख लेते हैं, क्योंकि मैथ्स है, सो वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन। तो देखते हैं इससे क्या आ रहा है। सो cos 2x आपने कॉमन ले लिया, फिर so you नहीं get सर 2 cos सर 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 क्या यहाँ पर माइनस 1 है, नहीं कहाँ की कांस्टेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कांस्टेंट भी था ना, cos 2 cos square 2x minus 1। ओके, वो यहाँ है, एक -1 भी था है ना। हाँ जी सर, ओके, तो फिर कैसे सॉल्व किया इसको आपने? फैक्टराइज कर दिया, 2 cos square 2x minus cos 2x minus 1 equal to 0। -2 cos 2x प्लस 2 cos cos नहीं सर, cos 2x। हेलो सर, जी जी, 2 नहीं है सर, यहाँ पर cos 2x का कोएफिशिएंट। आपने यहाँ क्या लिखा है फिर? यहाँ पर cos 2x सीधा राइट हैंड का यहाँ पर आए ना, लेफ्ट हैंड से। नहीं नहीं, ये तो हमने कर दिया, ये तो हमने किया यहाँ, ऐसे ही कुछ है ना। ये इक्वेशन है ये आपकी? नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं आई फिर? आप यहाँ पर cos 4x is equal to cos 2x लिखा है ना सर। चलिए स्टार्टिंग से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, सो वी हैव दिस फॉर्मूला, तो इसके बाद हमारा ये आ गया फॉर्मूला cos 4x is equal to cos 2 2x। cos square 2x। नो सर, उसको नहीं लिया पूरा, यहाँ पर चला गया। एक मिनट, पहले मैं ये लिख दूं फिर देखता है। इसकी वैल्यू ये होती है ना, इतना ठीक। हाँ जी सर, अब मुझे बताइए, ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें क्या किया आपने? वैल्यू किसकी वैल्यू रख दी? cos 4x, क्या रखी वैल्यू? 2 cos square 2x 2 cos square 2x minus 1 -1 minus cos 2x minus cos 2x, इतना ठीक है। equal to 0। ओके, हमने भी ये लिखा था वैसे। चलिए अब बताइए। अभी ब्रेक किया 2 cos square x हाँ, minus 2 cos square 2x, सॉरी सर। फैक्टराइज किया है ना, क्वाड्रेटिक हाँ जी, इक्वेशन है। हाँ जी सर, तो ये कुछ ऐसे होगा ना, इसको हम पहले तो ये लिखेंगे 2x, ये मिडिल टर्म है, minus cos 2x। -1 is equal to 0 है ना। यस सर, यस सर। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप मुझे। 2 cos square 2x 2 cos square 2x फिर minus 2 cos 8 cos 2x 2 cos 2x नहीं नहीं, मैं यहाँ क्या लिखूँ माइनस के बाद? माइनस के बाद 2 cos 2x 2 cos 2x then प्लस cos 2x plus cos 2x। minus 1 equal to 0। हाँ, तो शायद हम भी ये लिख रहे थे कसपर, चलिए रही कोई बात नहीं। 2 cos 2x कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ रह गया cos 2x -1 प्लस अगेन cos 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपके पास, एक तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2
यस ठीक है, और आ गया cos 2x इज इक्वल टू 1। हाँ जी सर। तो ये तो हो गया cos 0 है, तो ये तो n पाई आ गया यहाँ से सॉल्यूशन इसका, ये n पाई आ रहा है ना, हम्म, ठीक है, ये n पाई आ गया। फिर cos 2x इज इक्वल टू -1/2 है, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गए होंगे फिर। 2π/3। हाँ ठीक है, फिर ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, यू कैन अप्लाई एनी मेथड। सो किसी को डाउट है लीनियर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में? किसी को डाउट है इसमें? नहीं? ओके, सो आई थिंक होमवर्क सबने कर लिया होगा, लास्ट क्लास में जो होमवर्क था। प्लीज नोट डाउन द होमवर्क, प्लीज नोट डाउन द होमवर्क। असाइनमेंट 8 कंप्लीट, सारे टॉपिक्स हो गए असाइनमेंट 8 में भी, प्लस एनसीईआरटी कंप्लीट। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने टॉपिक्स हैं वो सब हमने कर लिए हैं, एनसीईआरटी प्लस असाइनमेंट 8, ये आपको करना है कल तक। ठीक, फिर हमें हमारे ग्राफ हैं, लास्ट और पोर्शन है, एक फॉर्मूला और है, वो हम कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो मे बी कल हो जाना चाहिए हमारी ट्रिक को। ठीक है, सो प्लीज ये आप कर लीजिए कल तक। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो एग्जाम में आ रहा है वो पहले करना है, या हम अपनी मर्जी से भी स्टार्ट कर लें? फिर एपीजीपी एबीजीपी एग्जाम में आ रहे हैं? तो वो करवा दिया है, लाइक हमारा ये खत्म हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री और एपीजीपी खत्म करा दिया है। अच्छा अच्छा, और किसी का ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना किसी पर्टिकुलर चैप्टर का? नहीं है तो एपी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, कल ट्रिको करते हैं, नेक्स्ट वीक से फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्लास फिर। सर मेरा क्वेश्चन। हाँ कस्पल, ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू सो मच, कल फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। बाय द वे सर, हाँ जी, सर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी खत्म करा दिए। कॉम्प्लेक्स हो गया? यस सर। सर हाँ कस्पल, बस एक मिनट। ओके सर।